Bismillahirrahmanirrahim. So I'm continuing the cat scratch disease session 2, and previously in the first session I have already discussed how this happens, and that is the etiology and the pathogenesis is concerned and the clinical features are concerned. Remember one thing, that this is a very common problem which is in the world. And second rule is this, that every 10 scratches, out of any 10 scratches, one can be harmful. It means hardly it is 10% around that the full-fledged cat scratch disease can occur. I am Professor S.A.D. Haider. I am ordinary global professor of medicine without any name or fame or any economics. It is a free channel. Those who are interested, they can watch this and they can put a book in front of you and then match it so that it is 100% perfect afterwards. So further, I want to discuss this, that the clinical situations are concerned. I have already discussed this. There are common problems that a pupil is formed, or satellite papules are formed, and the rash can occur, lymphadenopathy, reactive. These are the problems which are usually seen out of all clinical features. In about 5% of cases, and in rare situations, the cat scratch disease can lead to the development of serious neurological or the cardiac sequelae, such as meningoencephalitis, encephalopathy, seizures, or endocarditis. It may cause endocarditis, it can cause myocarditis even. Endocarditis associated with the Bartonella infection has a particularly high mortality. It is because it is very difficult to manage. Another disease which is called the Perinaud's oculoglandular syndrome is the most common ocular manifestation of this disease, and it is a granulomatous conjunctivitis with concurrent swelling of the lymph node near the ear, retromandibular, retroauricular group. Posterior chain, cervical chain may be involved. Optic neuritis or neuroretinitis is one of the atypical presentation, but it is rare. But the patient can be presented like this. But in those people who are immunocompromised, like HIV, etc., if the association occurs with the Borrelia hanseli, with the Borrelia quantana, which is a combination of this association, what is called as a basilarity angiomatosis or the basilarity pileosis. So this is a skin lesion, specific skin lesion which you see in HIV. The basilarity angiomatosis is a primary vascular skin lesion that may extend to the bone or be present in the near other areas of the body. In the typical scenario, the patient has HIV or another cause of severe immunodepression. Now, basilarity pileosis is caused by the Bartonella hanseli that most often affects people with HIV and other conditions, causing severe immune compromisation. The liver and spleen are primarily involved in this condition. Again, the granulomatous condition this is, with the findings of the blood-filled cystic spaces of pathology. So it is a granulomatous type of hepatitis and a granuloma found in the spleen. The liver and the spleen are both enlarged. Now look at this, is the Perinaud's oculoglandular syndrome. Although it is a rare one, it can be asked in the examination. Here you see there is a lower lids are involved. Inflammation is you can see. Even the conjunctivitis occurs in this condition. Now this is the swelling in the parotid area, and that is retromandibular. Lymph nodes are involved, submandibular group and retroauricular group. And there is a big swelling. This is again, you see in this condition,
the pupil, and then it is a big, bullous type of a lesion will occur. Now this is called the Perinaud's oculoglandular syndrome. Now here you see the conjunctivitis. It is possible. And the basilarity angiomatosis is a rare condition, very specific. Here you see the angiomas on the near the chin areas and the beard area. And these are not the capillary hemangiomas. They are different than that. What is the difference between the two is that they can penetrate to the nearby, or they can penetrate interiorly inside it, and the bone can be involved, the muscle can be involved. Even it can cause the compartment syndrome. So basilarity angiomatosis is a malignant type of a behavior. You see the granulomas in the liver, the spleen, species are seen. If the biopsy is done, it should turn out a granuloma. And this is you see what is the optic neuritis. Along with this is the all vessels see here in the periphery with it is a retinogram which is shown in front of you. You see this. This is the optic disc which is blurred actually. Here is a localized swelling. You see, again is a granuloma under the skin. First the pupil formed, then is big one. And the draining lymph nodes may be involved. How do you diagnose this condition? Because the history of a cat scratch or cat bite or association with the cat is number one. Number two is that the diagnosis is done in those areas who are geographically where there is some endemic or endemic. Then third thing is that the lab diagnosis is concerned. PCR has a sensitivity of 43 to 76%. Okay? And specificity is 100%. If it is done, then the specific nature of the PCR will become positive. Direct evidence is more gold standard. If the lesion is on the skin, the pupil is there, or the granuloma or whatever it is under the skin, then the biopsy will be taken out, punch biopsy of the skin, and helpful to show the presence of the Bartonella hanzeli, but is often difficult to interpret. It is difficult to interpret by the microbiologist. Actually, it can be cultured, and it will take 2 to 6 weeks to incubate. And again, the culture problem is again there. It is difficult to culture. Histopathology is that the cat disease is characterized by the granulomatous inflammation on histological examination of the lymph nodes or a lesion. Under the microscope, the skin lesion demonstrates circumscribed focus of necrosis surrounded by the histiocytes, often accompanied by the multinucleated giant cell lymphocytes as xenophils. The regional lymph nodes demonstrate the follicular hyperplasia with the central stellate necrosis with neutrophils surrounded by the palisading histiocytes. That is called separative granulomas. The end result of the neutrophils are their invading, and the death occurs because of the war between the Bartonella and the neutrophils. The end result with the pus cells will form, and they will make a space. Sinuses are formed around the area, and they are packed with the monocytoid B cells, usually without perifollicular and the infrafollicular epithelioid cells. This pattern, although typical, is only present in minority of the cases, although it is very gold standard. If you find this type of a granuloma, eosinophils and
surrounded by the lymphocytes, palisade, histiocyte, etc. Now here is a draining lymph node stained by the hematoxylin. You can see in this area there is a necrotic areas are there, surrounded by the neutrophils, surrounded by the lymphocytes, the monocytes, etc. High magnification of this same picture showing a granuloma, this is specifically pale cells right or center on a maze and a micro abscesses with neutrophils and in the stained high magnification micrograph. There are a lot of neutrophils on this side. These are all neutrophils. Now, you diagnose it on the basis of, it means that a history of a scratch by a kitten or a cat or the same family. And in some cases, other than that possibility, for example, hares and the rabbits, they can scratch your skin. So the management is important. Everybody was interested previously with the management is concerned. Your diagnosis is done by the history. 1 in 10, only 10% can be affected. Whether it is a localized type of a problem or it is maybe the Bartonellosis. Because this condition can lead to problems and a complication like endocarditis and myocarditis and the meningitis, meningoencephalitis, etc. Liver may be involved, the spleen may be involved. First of all, if they brought the children or a adult कि भाई बिल्ली जो है या किटन जो पागल तो नहीं हो गई थी, रेबिस के चांसेस होते हैं इसमें, वो ये बताते हैं पागल तो नहीं है हो गई ये बिल्ली, हो सकता है पागल हो. तो भाई एक्चुअली किटन जो आपने पाली है, द कैट जिसने आपने बोरो की है, उसको आप 10 वही है लिमिट. अगर वो रेबीड हो गई है तो वो डेथ हो जाएगी उसकी. उसके बाद आप वैक्सीनेशन करवा लें, इसके अंदर चांसेस बहुत कम होते हैं. रेबीज को जो इन्वॉल्वमेंट है विथ कैट इज कंसर्न आर नॉट वेरी कॉमन, इट इज़ नॉट वेरी कॉमन. सो उसको तो निकाल दें बाहर. सेकेंडली जो किटन होती हैं जो कैट हाइजीनिक लोग मतलब जानवर है बहुत ज़्यादा. आपने देखा होगा हर वक्त दे आर लिकिंग एंड क्लीनिंग दी स्किन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब इसके अंदर जो है ना वो उसका जो उसकी यूरिन के अंदर अगरचे कि यूरिन भी ये पास करता है बड़े हाइजीनिक तरीके से, यू नो दैट, वो खोदता है उसके बाद यूरिन करता है फिर उसके ऊपर मट्टी डालता है, फिशिस को भी करता है. हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए अलाउ किया जाता है ये बगैर उसके चैन नहीं आता उसको. और अगर आप उस पर वाटर का स्प्रे कर देंगे तो पागल हो जाएगा, वो चाट के मर जाएगा. इतनी ज़्यादा मतलब सफाई पसंद है. इसके बावजूद भी जो है ना देयर आर चांसेस दैट टिक्स और फ्लेयर्स हैं वो उसमें मौजूद होंगी कि डेप्थ में होते हैं, वो आपको नज़र नहीं आते, उनको वो निकाल नहीं सकता, उसको पिक करना पड़ता है, उड़ते हैं वो. मे बी पॉसिबल कि वो उस वेक्टर से जो है ना वो आपको नुकसान पहुंच सकता है. अब चूँकि बाइट हुई है या फर्ज करें स्क्रैच हुआ है तो फिर जो सबसे पहले है वो अगरचे हाइजीनिक एनिमल है तो प्राइमरी प्रिवेंशन के तौर पे जो है ना वो आप टेटनस टॉक्साइड उसको लगा दें. सभी यही करते हैं यहाँ पे और रुखसत कर देते हैं. बट मोस्ट हेल्दी पीपल क्लियर द इन्फेक्शन विदाउट ट्रीटमेंट टू अबॉर्टिव अबॉर्जन हो जाता है ट्रीटमेंट ठीक मोस्ट ऑफ द पीपल. But in 5 to 14% of individuals, the organism disseminate and infect the liver, spleen, eye, central nervous system. Although some experts recommend not treating the typical catch skin disease in immunocompetent people with mild to moderate illness. Treatment of all people with antimicrobial agents, grade 2B, that is, they are grading it. It's suggested to
द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसेमिनेटेड डिजीज। अगर एविडेंस मिलता है आपको कि ये सिस्टमिक हो गया है, फीवर हो रहा है, प्राइमरी रीजन इनलार्ज हो गया है, टेंडर लिम्फेडेनोपैथी है फॉर एग्जांपल, इन सारी कंडीशन में इसका मतलब है कि द डिसेमिनेशन और द पॉसिबिलिटीज, लिवर इनलार्ज है, स्प्लीन इनलार्ज है। एकोकार्डियोग्राम ने बता दिया है आपको कि इसके अंदर वेजिटेशन भी है। अब ये जो डिजीज़ है ये बहुत कम लोगों में जो है ना वो बार्टरलोसिस करती है, फिर भी जो है प्रीफर्ड एंटीबायोटिक फॉर द ट्रीटमेंट इज एजिथ्रोमाइसिन। ये देखें, ये जो है ना फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस। सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस जो है, और जो ये प्रेगनेंसी में सेफ है, टू अवॉइड द टेराटोजेनिक साइड इफेक्ट्स, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है। फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस ये है मैक्रोलाइड, सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन। Doxycycline is preferred to treat the Bartonella Hansley infection with optic neuritis due to its ability to adequate penetrate the tissues of the eye and CNS. अब अपनी इसकी जो है ना वो there are definitely advantages to giving it is a cheap medicine, can be tolerated well। अगर उसको सही तरह समझा दें पेशेंट को तो prolonged मैनेजमेंट हो सकता है इसके साथ। एजिथ्रोमाइसिन का ट्रीटमेंट होता है वो 7 to 10 डेज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो आपके पास जो टूल्स हैं वो मैक्रोलाइड्स हैं या फिर डॉक्सीसाइक्लिन है। असल बात यह है कि प्रिवेंशन, कैट स्केर डिजीज कैन प्राइमरी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग इफेक्टिव फ्ली कंट्रोल मेजर्स, सिंस कैट्स आर मोस्टली एक्सपोज टू द फ्लीज व्हेन दे आर आउटसाइड। कीपिंग कैट्स इनसाइड can help prevent infestation। if you are keeping the cat then आपको उसमें जो है ना आपको गमले रखने पड़ेंगे, उसके अंदर बड़े बड़े गमले रखें ताकि वो अपने यूरिन को पास कर सके और स्टूल पास कर सके, या ट्रेन किया जाए उसको। बाकायदा कुछ कैट्स को ट्रेन कर देते हैं और छोटा सा वो बना देते हैं उनके लिए टॉयलेट टाइप की चीज़, वहाँ भी वो रेत वेत डालते हैं वो सारी। ये लंबा किस्सा है, जो अमीर लोग हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो वहाँ पे वो जो है ना वो डिसइंफेक्टेंट भी डालते रहते हैं और इस तरह से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। स्ट्रिक्टली इंडोर कैट्स विदाउट एक्सपोजर टू द इंडोर आउटडोर एनिमल्स आर जनरली नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ दिस। अगर कैट बिल्कुल पालतू है, बाहर जाती ही नहीं है वो। तो इसी तरह है ना क्रिप्टन डिफेंस के अंदर उमन जो कैट्स हैं या जिन्होंने शौक़ है जो अपने ऊपर रखे हुए हैं 10 मंजिला इमारत में रह रहे हैं वो कैट्स के साथ, तो उनके लिए अगर स्क्रैच भी हो जाएगा तो इतना चांस नहीं है कि सिस्टमिक बार्टोनोलोसिस हो जाए। मेरा तो ये होता है हमेशा कि मैं रिस्क नहीं लेता कभी भी। मैं अगर बड़ा कोई आया है तो मैं उसको डॉक्सीसाइक्लिन दे देता हूँ 5 to 7 डेज, यानी कीमो प्राइमरी कीमोप्रोफिलैक्सिस। और अगर बच्चा आ गया तो फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन इस्तेमाल करता हूँ मैं 5 to 7 डेज। असल में बात यह है कि बार्टोनोलोसिस एसिम्प्टोमेटिक होता है। द थॉरली वॉशिंग हैंड्स आफ्टर handling a cat or a cat feces is an important factor in the preventing potential scratch disease transmission for possibly infected cats to the humans। तो the humans के साथ अगर आप इस रिलेशनशिप है तो अपने आप को जो है वो सही हैंड वॉशिंग करें और ज़ाहिर है डिस्पोजल करना है फीसेस का, क्योंकि आप 10वीं मंजिल पे रह रहे हैं तो गमला जिसके अंदर वो कर रही है तो एक मौका ऐसा आता है कि वो फिर ज़ाहिर है आपको चेंज करना पड़ता है, नीचे ले जाना पड़ता है, सारी फेंकना पड़ता है, फिर साफ करके फिर नई रेत डालनी पड़ती है। अब इतना नाजुक जानवर होता है कि ऐसे ज़रा भी स्मेल आ गई कि आपने कुछ प्रीमेथरिन डाल दी है, कुछ डाल दिया, तो वो करेगा ही नहीं। वो कालीन पे करना पसंद कर, कालीन पे कर देगा। और कितने जो होते हैं अगर उनको जगह नहीं मिलती, छोटा होता है बहुत है, और ज़ाहिर है कि उसको भी इतना ट्रेन नहीं हुआ होता, होल्ड नहीं कर सकता उसको। उमन जो होता है वो फर्श पे कर देता है, फ्लोर्स पे कर देता है, और फ्लोर पे जो है टॉडलर्स भी बच्चे घूम रहे होते हैं, तो उस तरह से वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, बग़ैर स्क्रैच के इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये बताना मकसद ये था कि ज़रूरी नहीं है स्क्रैच हो। वो यूरिन के अंदर पास कर रहा था तो यूरिन बच्चा क्या पता कि यहाँ यूरिन पड़ा हुआ था या फीसेस के टुकड़े पड़े हुए थे।
छोटा बच्चा है उसको तो पता ही नहीं है। इस तरह से वो इन्फेक्टेड हो जाता है विदाउट स्क्रैच। तो प्रिवेंशन के लिए जो नोट डाला है इन्होंने मोस्टली वो ये डाला कि अवॉइड बाइट्स एंड स्क्रैचेस, खास तौर पर किटन्स। वॉश द वुंड्स इमीडिएटली, अगर डाल दिया है तो उसको आप 15 दिन से वॉश कर लें। और फ्ली को चेक कराएं। अब ये जो ना वेटेरियंस अच्छी तरह से चेक करते हैं और देखते हैं उसको, जब फ्लिया होता है उसको रिमूव करते हैं, तो चार्जेस होते हैं उनके। उसके बाद जो है ना क्लिप नेल्स, स्पेसिफिक चीज़ होती है जो इस्तेमाल की जाती है, क्लिप नेल्स, वो जो है ना उससे जो है ना कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं नज़र तो आएगा नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि बिल्ली के बाल बड़े घने होते हैं, क्लिप्स लगा देते हैं तो उसमें ये होता है जो अगर इसमें जो है ना वो कोई माइट है या फ्लिया है वो सामने आ जाता है। कीप कैट्स इंडोर्स। और कीमो प्रोफिलैक्सिस जो है ना आप दे सकते हैं, मैंने अभी बताया कीमो प्रोफिलैक्सिस, प्राइमरी कीमो प्रोफिलैक्सिस। अब ये तो एक बात थी जो मैंने आपको बता दी कि जो भी आया पेशेंट उसको आप रेश्योर करें, उसका वूंड वॉश करा दें और उनको समझा दें कोई परेशानी की बात नहीं है। और टेटनस ऑक्साइड लगाना है आप लगा दिए, ठीक है, एग्रीड, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, एक बात बता दूँ। फिर उसके बाद जो मामला है वो ये कि अब हमें नहीं पता कि इसको बार्टोलोसिस हो जाएगा, तो फिर कीमोप्रोफिलैक्सिस मैं तो देता हूँ, मैंने अपनी बात कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस करता है, तो मैं प्राइमरी कीमोप्रोफिलैक्सिस 5 to 7 days में देता हूँ। अगर हो गया किसी को वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस हो गया या कुछ और हो गया तो फिर आप मसले में गिरफ्तार हो जाएंगे। एक क्वेश्चन है जो मैंने अपने स्टूडेंट से किया है बार बार, व्हाट आर द कैट बोर्न डिजीजेस। उसमें तो एक तो कैट स्क्रैच डिजीज है जो स्पेसिफिक है, दूसरी एक इसके राउंड वॉर्म्स की जो साइकिल चल रही होती है वो कैट से रिलेट करती है, ठीक है ना। इसलिए जो स्क्रैच नंबर क्वार्टिस जो है खास तौर पे उसको जो है ना वो जो साइकिल कंप्लीट करने के लिए इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है, वो कैट टाइप की चीज़ चाहिए होती है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस अगेन ये जो है ना प्रोटोजोआ बड़ा स्पेसिफिक इसकी जो है ना डिजीज़ है ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस। लोग नहीं पढ़ते इसको, और ये टॉर्च में भी शामिल है। प्रेगनेंसी अगर किसी को हो जाता है तो वो एक्सक्लूड करते हैं इसको, TORCH उसमें शामिल, टी से ही स्टार्ट किया मतलब टॉर्च को उन्होंने, टॉक्सोप्लाज्मोसिस। अगर हो गया तो क्या करना है, वो जब आएगा जिक्र कभी बात होगी तो ध्यान नहीं डालिए। रेबीज़ के चांसेस क्योंकि जंगली कैट तो है नहीं है, अगर रेबीड हो भी गई है फर्ज करें, वैसे चांसेस के वैसे भी इसको रेबीज़ कराने वाली कोई चीज़ तो मौजूद है ही नहीं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि आपको शुबा है तो कैट या किचन जो है डेथ हो जाएगी उसकी 7 to 10 days में। फिर आप जो है ना एंटी रेबीज सीरम इस्तेमाल कर लें। एंड द कंपाइलोबैक्टीरियोसिस, ये जो है ना इसके साथ एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया, और जैसे जिक्जुलम होता है इस तरह बैक्टीरियोसिस होता है, ये डायसेंट्री टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस तरह साल्मोनेलोसिस, ज़्यादातर जो है ना नॉन टाइफोइडल साल्मोनेलोसिस की बात हो रही है, वो जो है ना वो इससे जो है ना रिलेट करता है कैट से, और जानवरों से भी करता है, इनसे भी करता है। इसलिए हाथ फेर रहा है आदमी और उसके बाद खाना खाया उसने तो साल्मोनेलल फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। क्रिप्टोस्पोरिडोसिस खास तौर पे जो है ना, दिस इज अगेन अ पैरासाइट विच इज सीन इन HIV, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, उसको डिफिकल्ट है मैनेजमेंट, आइसोपेराबेलाए है मिसाल के तौर। क्रिप्टोस्पोरिडोसिस जो होता है वो भी इसी तरीके से वो कैट्स के साथ रिलेशन करता है, और जो कैट्स जो होती है वो अपने आप को लीकिंग करती है चारों तरफ, लेकिन डेप्थ में जो डेप्थ है यानी जो हेयर है उसके अंदर वहाँ ये क्रिप्टोस्पोरिडोसिस होता है, वो उसको नहीं कर सकती। आप तो पूरा हाथ फुल फेर रहे हैं ना, तो क्रिप्टोस्पोरिडोसिस हो जाए। इम्यूनो सब कॉम्पिटेंट तो कुछ नहीं करेगा ये, लेकिन इम्यूनो सप्रेस्ड है तो ये ज़ाहिर है कि प्रॉब्लमेटिकल हो जाएगा। फिर जियाडियासिस भी इसी तरह से, ये भी प्रोटोजोन इन्फेक्शन है। तो फ्लूफिसिस है ख़ास तौर पे कैट्स की, वो ये जियाडियासिस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ इन्फेक्शंस जो है ना कैट बोन के इसमें लिख दिए गए हैं।
और भी हो सकते हैं। हमें जो है ना, अगर कोई बता रहा है तो अगर कैट स्केच डिजीज बताएगा, टॉक्सोप्लाज्मोसिस बता दे, वो कम से कम 2 डिजीज तो उसे बतानी है। अगर वो सबसे पहले रेबीज बोलता है तो हम तो पास नहीं करेंगे उसको, ये अनकॉमन है इसमें। बाकी जो डिजीज़ हैं, नॉन टाइफाइडल सामनोसिस, क्रिप्टोस्पोरोसिस, जियाडिसिस, ये बता दें इनमें से कोई, तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन आप सबसे पहले रेबीज बोल रहे हैं तो गलत है, ये इतना अनकॉमन है इसमें। तो ये उम्मीद है, आई होप सो, कि आपने कैट स्केच डिजीज के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की गई है, वो आपने सुन ली होगी। और अगर किसी को याद रह जाए तो बड़ी मेहरबानी उसकी। और मैनेजमेंट आप करते हैं ओपीटी में, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप उस तरह फॉलो करें जैसे मैंने बताया, तो फिर कुछ चांसेस इसके नहीं होंगे, बार्टेनोलोसिस, सिस्टमिक बार्टेनोलोसिस नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।